we are starting the forces here. ठीक है, और जो forces होती हैं वो what are the forces? I'm going to begin. We're going to start from the moment of force and then we'll proceed. You should know that for example, you have this object here. You should know that this object would have forces in various directions here, downwards. But there is one single point where the entire weight of the object appears to act. There is one single point here where the entire weight of the object appears to act. And we call this single point here the center of gravity, right? So this is the single point where the entire weight of the object appears to act. ठीक है जी? अच्छा, ये जो पॉइंट है ये आपको रिजल्टेंट फोर्स देगा. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स हियर एंड दिस इज इक्वल टू द वेट mg as you know here. इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दिस पॉइंट हियर इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. व्हाट we'll write here is center of gravity. And you should know that the entire weight of the object appears to act for any orientation of the object at this point known as the center of gravity, right? So you have the entire weight here which is acting at this point and we call this the center of gravity, right? आप लोगों को एक बात पता होगी, आप लोगों ने मोमेंट्स ऑफ फोर्स पढ़ा था और उसमें हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. I have an object here, right? And this is the pivot that we have. We call this the pivot. Okay. If there is a force which acts perpendicularly like this is the force. Okay. And this is the line of action of force that we have. This is the line of action. देखिए ये पूरी line of action जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक जाएगी. This is the line of action of force, and you see that this is the perpendicular distance here. Okay? This is the perpendicular distance. You should remember here that the moment of a force about a point, this is the point that we have. Point कोई भी point हो सकता है, आप किसी भी point को pivot ले सकते हैं. ठीक है? इसका जो मोमेंट होगा, देखिए ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट आपके पास प्रोड्यूस करेगा. अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जैसे आपके पास एक ये बैरियर है, अगर आप इसको यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो नीचे जाएगा, राइट? लाइक दिस. ठीक है? दैट यू आर अप्लाइंग अ फोर्स हियर एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड अ मोमेंट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. You should know that the moment of a force about a point is the product of that force. This is the force that we have, and the perpendicular distance from the line of action of force to that point. And we call this point what? The pivot. ठीक है जी. आपने अगर आपके पास फोर्स परपेंडिकुलर है, ये पिवट है, जैसे आपके पास दरवाजे का हिंज होता है, तो आपने दरवाजा खोलना है तो आप फोर्स उसके परपेंडिकुलर लगाते हैं और वो रोटेट कर जाता है. ठीक है?
and this is known as the moment of force, and it is given by the product of force and the displacement d, okay, which is the perpendicular displacement here. Distance is perpendicular. Sir, I had a question. Yes. Sir, what do you mean line of action of force? Line of action of force means that if the force is acting here, you just extend it all the way. So this is the line of action. उसी की डायरेक्शन में जो आप उसको एक्सटेंड करते जाएं, this is the line of action, right? इसको line of action of force मतलब इस line के through force act करेगी. For example, आपके पास you have here a tire and you want to tighten the nut. आपने टायर को टाइट करना है यहाँ पे, ये nuts लगे हुए हैं यहाँ पे, and this is the spanner here. ठीक है, this is the spanner that we have, and you apply a force like this. This is the force F, and this is the pivot that we have, this thing here, and you see that this is the perpendicular distance d, right? So now this is what, this is the line of action of force. This is the line, and you just move the spanner, and this will be tightened, right? आप इसको tight करें, समझ आ रही है? आप force Yes, लगा रहे हो, sir. ये tight. And this would produce a moment, right, sir? This will produce, yes, this is producing a moment. This is the pivot that we have. This is the pivot, and this is the perpendicular distance that we have, F and D, right? और ये आपके पास moment of force produce करेगा. इसी तरह से अगर आपने बॉटल को ओपन करना है, तो आपके पास ये there is a screwdriver here, and what you'll do is you will apply a force like this. You see, आप force लगाते हैं इस तरह से, and this is the perpendicular distance, और ये open हो जाता है. SI unit for moment is Newton meter, because we have the force in Newton and the distance is in meter. So this is what we have. We have here, this is in newtons and this is in meters, right? So SI unit for moment is Newton meter, because the moment is F into D. Is moment a scalar or a vector? Moment is a vector, right? Remember that. Moment is a vector. Remember that, right? You should also know that there are two types of moments. One is the clockwise movement and the other one is the anti-clockwise movement, right? So for example, you have a pivot here and you apply a force like this, which is perpendicular, and this is the distance D. This was the pivot that we had. Now, if you see here, what sort of movement is this? Is it clockwise or anti-clockwise? Clockwise. It is clockwise, right? This force is F, this distance is D, and this is a clockwise moment that we have. ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास ये pivot है और you have a force here, this is also clockwise. You see, you're following the same rotation. This is the pivot, and if this is the distance D that we have, again, this is a clockwise movement. So both of these are nothing but clockwise movements. These are the clockwise movements. The next thing is about the anti-clockwise movements, right? उसके बारे में हम बात करते हैं. Anti-clockwise movement में क्या होता है? Anti-clockwise movement. We have here the pivot, and we have a force here, and this is the distance D that we have. This is the pivot. तो मुझे बताएं कि ये कौन सा मोमेंट है? This is anti-clockwise. आपने हमेशा जो है वो पिवट की तरफ रोटेशन करवानी है, मतलब पिवट की तरफ मूव करे, क्योंकि ये उस तरफ तो जा नहीं सकता, ये उस तरफ तो जाएगा नहीं. So you have to move it in such a way that
It's forming an anti-clockwise movement, right? अच्छा, यहाँ पे भी this is the force that we have. This is the distance. And you see that this is again what? This is anti-clockwise movement, right? तो ये आपको दो किस्म के मोमेंट्स जो है वो आपको अच्छी तरह से इसका आइडिया होना चाहिए. अच्छा, द थिंग इज के यहाँ पे तो फोर्स आपको परपेंडिकुलर दी हुई है, राइट? बट व्हाट हैपेंस इफ यू हैव फोर्स एट एन एंगल? You have here the pivot, for example, and the force is acting like this. ठीक है, आपके पास ये फोर्स इस तरह लग रही है, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे मैं फोर्स को इधर लगा देता हूँ, राइट? लेट मी ड्रॉ इट अगेन. आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइक दिस इज द पिवट, and for example the force is acting like this. This angle here is theta. This distance is d. मुझे बताएं कि अब इसका मोमेंट कैसे निकालेगा? Components. ये component बनेगा क्या? What is this component? This one, f sine of theta. This component here is f sine of theta. What about this component? According to the definition, moment is the product of what? The perpendicular force. ठीक है, the line of action of force and the perpendicular distance from the pivot. तो इसका मोमेंट क्या बनना चाहिए? What is the moment? F sine of theta into the distance d. So this becomes fd sine of theta. अच्छा, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का सिनेरियो होता और थोड़ा सा नीचे बना देता. अच्छा, जैसे आपके पास ये है और आपके पास यहाँ पे जो है वो फोर्स रिएक्ट कर रही है और उन्होंने आपको ये वाला एंगल दे दिया अल्फा. अब देखिए एंगल चेंज्ड है, ये पिवट था and this is the distance d. Either you can find this angle or you can just directly, पहले इसको दो तरीके हैं सॉल्व करने के. एक तो ये कि आप जो ओल्ड मेथड से कर रहे थे कि ये 90 डिग्री था पूरा, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा. ऐसे ही है जी. दिस एंगल इज 90. अब आप इसके जो कंपोनेंट्स बनाएंगे तो ये कंपोनेंट बनेगा आपके पास f sin of 90 माइनस अल्फा, और ये वाला आपके पास बनेगा this one is f cos of 90 minus alpha. f cos of 90 minus alpha, right? So now you'll apply the principle of moments, principle of moments कह रहा हूँ, moment का force का formula जो है moment of force का, that is f into d. So here the perpendicular force is f sin of 90 minus alpha. ठीक है, ये वाला आपने component लिया, ये वाला into d, and this becomes fd into sine of 90 minus alpha. But there's one more thing that you should need to know is that sine of 90 minus alpha is in fact equal to cos of alpha. इसकी इक्वल होता है, मैथमेटिकली प्रूवन है. ये जो आइडेंटिटी है ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताई थी वेक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे. ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा इज cos अल्फा. तो आप यहां लिख सकते हैं एफ डी, ये क्या बन जाएगा? cos अल्फा. आप इसको डायरेक्टली एफ डी cos अल्फा भी कर सकते थे. अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये मेरे पास पिवट था यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास फोर्स लग रही थी एफ. अच्छा, ये एंगल आपको उन्होंने दिया हुआ था अल्फा. दिस एंगल वाज अल्फा. नाउ व्हाट यू कुड हैव डन इज यू कुड हैव फाउंड द कंपोनेंट. इसका कंपोनेंट मैंने बताया था साथ जो होता है एंगल के वो होता है cos. तो ये कंपोनेंट बनता है यहाँ पे f cos ऑफ अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनता है? देखिए एंगल के सामने वाला हमेशा साइन होता है, तो ये भी वही होगा f sin of alpha. And this distance here is d. So again you see that the moment here becomes what? F cos of alpha
into d. So this becomes fd cos of alpha. So you see that they are the same. The same. So we have talked about that weight of an object may be taken as acting at a single point known as its center of gravity. We have talked about define and apply the moment of a force. We are going to start with couple. Understand that couple is a pair of forces that acts to produce rotation only. And we'll also talk about define and apply the torque of a couple. हम इसमें भी बात करेंगे, ठीक है? We'll see how torque is different from the moment, right? And let us begin. We have here the couple, right? What is a couple? A couple is a pair of forces which tends to produce rotation only. ठीक है, इससे rotation produce होती है, and it's like driving the steering wheel, right? And you apply a force upwards and you apply a force downwards. I'm going to show you that. Remember that these forces are parallel and equal in magnitude, but in the opposite direction. These forces are parallel, but they are in the opposite direction. Equal in magnitude, but in the opposite direction. For example, we have here a steering wheel like this. And what you can do is that एक फोर्स यहां पे लग रही है इस तरह और एक फोर्स यहां पे लग रही है like this. ठीक है ना, आप इसको रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप स्टीयरिंग व्हील के साथ यू आर प्रोवाइडिंग द रोटेशन, और इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है, दैट डिस्टेंस इज d, right? I'll call that distance, this distance is d. Okay, and it is producing what? It is producing an anti-clockwise movement. You see, एक anti-clockwise movement बन रहा है यहाँ पे. ये देखिए इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ओवरऑल एक रिजल्टेंट एंटायर, देखिए इक्विलिब्रियम में नहीं है ये. दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है. So there's a moment, resultant moment of an anti-clockwise direction, and what you can see here is that if I take the pivot, I can take pivot anywhere here. I can take the pivot anywhere, right? मैं यहाँ सेंटर में भी ले सकता हूँ, यहाँ पे भी ले सकता हूँ. आप देखिएगा आंसर सेम ही आएगा. For example, I take the pivot at the center. So this is the pivot that we have. This distance is what? This distance is, I'll call this distance d by 2. I'll also call this distance d by 2, right? अच्छा, ये अगर pivot ये है, तो मैंने आपको बताया था मोमेंट जो होता है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. सो टॉर्क ऑफ कपल क्या होगा? एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये बन रहा है पिवट से, और एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ये बन रहा है. तो आप ओवरऑल इस मोमेंट को और इस मोमेंट को ऐड करेंगे तो आपके पास टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा. ठीक है. इफ देयर आर मोर देन वन फोर्सेस इन्वॉल्व्ड, then if you add different moments, that becomes torque. I'm going to write the definition as well. So this is F times d by 2 plus, here again we have force F. ठीक है. एक देखिए ये डिस्टेंस था d by 2, ये डिस्टेंस भी d by 2 था, and you get what? You get fd by 2 plus ft by 2. So this becomes 2fd by 2. इन दोनों को ऐड करेंगे 2fd by 2 हो जाएगा, ये 2 2 से कट जाएगा और टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा. ये टॉर्क का साइन है, दिस इज द टॉर्क.
टॉर्क का सिंबल ये होता है, ठीक है, F into D. So remember that the torque of couple is when you have one of the forces multiplied by the distance between the two forces. आपने एक फोर्स को उठाना है और उन दो फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको यहां लिख देना, आपका आंसर जो है वो टॉर्क का आ जाएगा। इसको मैं एक और तरीके से आपको करके दिखाता हूं, जब आप डिस्टेंस सेंटर में नहीं लेते, राइट, ठीक है। इसका एक और तरीका ये है कि आपके पास यहां पे you have something of this sort and one of the forces is acting here and one of the forces are acting here. अच्छा, ये अब आप पिवट यहां ले लेते हैं. So this distance for example is d by 4 and for example this distance is now 3d by 4. ये d by 4 है और ये 3d by 4 है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका पिवट से d by 4 है और ये डिस्टेंस आपके पास 3d by 4 है। तो अगर आप थोड़ा गौर करें यहाँ पे, तो जो टॉर्क होगा वो कैसे होगा? टॉर्क इज, ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज है, दिस वन इज आल्सो एंटी क्लॉकवाइज, सो द टॉर्क हियर बिकम्स Yeah. F into what? d by 4 plus F into 3d by 4, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फोर्सेस लग रही होती है। अगर ये डिस्टेंस 2d होता तो यहाँ पे F into 2d आ जाता, ठीक है। तो ये आपके पास FD by 4 प्लस 3FD by 4 आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास 4FD over 4. This 4 is going to cancel with this 4 and tau becomes F into D. So no matter where you take the pivot, the answer is the product of one of the forces and the perpendicular distance between the two forces. And remember that essentially a couple consists of two equal but opposite forces whose line of action do not meet. लेकिन इनके line of actions they're not meeting since they are parallel. ठीक है, whose line of action do not meet, right? Torque of couple की definition अगर आपको आएगी कभी, तो what you'll write here that the torque of a couple is the product of one of the forces and the perpendicular distance between the two forces. Remember that. तो ये आपका torque of couple है. Two forces each of magnitude F act in the opposite direction on the rod. As you can see here, the answer is C. Total distance दो forces के दरमियान 2d है. Remember the definition that you have to take the distance between the two forces. ठीक है? So torque is the product of one of the forces and the perpendicular distance between the forces. So this becomes 2FD. C is the answer. ये देखिए ये क्या हो रहा है, मैंने आपको यही तो उस वक्त से बता रहा हूं कि आपने ये उसी तरह से देखिए, ये d by 2 है, ये भी d by 2 है, वहां पे ये d था और d था, तो टोटल यहाँ पे d बन रहा है, तो यहाँ पे वहां पे 2d बन रहा था टोटल डिस्टेंस,
तो आपके पास देखिए a couple is applied to a tap as shown. What is the torque? It's C. Very good. ठीक है, आपने डबल डिस्टेंस ले लिया. आप क्या करेंगे, आप इसका कंपोनेंट निकालेंगे. ये है 2 sin of 50. ठीक है, यहां पे भी आपके पास ये कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, वो भी 2 sin of 50 बन रहा है. ठीक है ना, इसके सामने वाला हमेशा साइन होता है एंगल के सामने वाला. इट्स लाइक दिस. तो सी आंसर है. ठीक है, और आपके पास इन इसका पूरा जो डिस्टेंस है, रूलर का लेंथ जो है वो क्या है, 0.3 मीटर्स. तो आप क्या करते हैं, टॉर्क इज एसेंशियली व्हाट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस. आपने एक फोर्स को लिया, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, व्हिच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हियर, एंड दिस बिकम्स व्हाट, 0.46 न्यूटन मीटर. अगर आपके पास इस तरह से आ रहा है जी, ये देखें, ये आपके पास रेडियस दिया हुआ है r, ये फोर्स लग रही है 4F और ये फोर्स लग रही है 4F. मुझे बताएं इसका टॉर्क ऑफ कपल क्या होगा. 2r into 4F. वेरी गुड. ये डिस्टेंस आपके पास 2r होगा ना. ये देखिए r अगर रेडियस है तो डायमीटर इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 2r हो जाएगा. सो टॉर्क इज वन ऑफ द फोर्सेस, दिस इज 4F multiplied by the perpendicular distance between the forces. So this becomes. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. ये आपको पता है वैसे, लेकिन हम इससे इक्विलिब्रियम से उस पर भी जाएंगे. द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स. ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, राइट. You should know that there are two conditions for the equilibrium. Of forces acting on a rigid body. अच्छा, एक कंडीशन तो ये कि सम ऑफ फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. इसको ये समेशन का साइन होता है, आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी देखा होगा. सम, ये सम का साइन है. समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 0. सम, इसको हम कहते हैं समेशन. This is the summation, which means addition. If you have forces in x direction, then a resultant would be equal to 0. मैं अभी बताता हूँ कैसे. If you have forces in y direction, their resultant is also going to be 0. ठीक है, so this is the resultant force in the x direction. And this one is, this is what, this is the resultant force in the y direction, right? Resultant of forces in the, or in case अगर z direction भी आ जाए 3D में, ठीक है, if you have x, for example, this is x, this is y, and this is z, तो उस केस में भी जो है ना, वो summation of forces in that direction is also equal to 0. That is rare, right? In this your AS level course. You should know that the first condition of equilibrium is that the vector sum of all forces acting on a rigid body must be 0. ठीक है, 0. इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ये कोई रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही. रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की फॉर्म में. This ensures
rotational equilibrium. For example, you have an object here and you have a force which is acting here. This is 3 Newton. This is 2 Newton. And this is 5 Newton. So what is it? Is an equilibrium because ये right पे positive है और left पे आपके पास ये negative है. Answer क्या आ रहा है? 0. Resultant is 0. Okay, this is according to summation fx, right? Forces in the x direction is equal to 0. Is that clear? जी सर. ठीक है. और अगर आपके पास इस तरह से होता, ये 4 है, ये 2 है और ये 6 है, तो ये वर्टिकली जो है वो उस पे है, राइट? So we have 4 plus 2. Again, the answer is 0. So this ensures that it is in translational equilibrium. So I hope that you understood the concepts.